Good morning, class. Good morning, sir. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर. कहाँ पर थे हम लोग? सर ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया था. पूरा हो गया था ऑपरेटिंग लेवरेज. यस सर, उस पे क्वेश्चन भी हो गया. उसका एडवांटेजेस डिफाइंड किया. नो सर. और फिर वो सब नहीं हुआ. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं हुआ था ना. नो सर. चल लिखना स्टार्ट करो. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. पहला पॉइंट. It gives an idea about the effect of change in sales on the operating income of the firm. Idea about the change in sales on the operating income of the firm. Point number 2. High degree of operating leverage. High degree of operating leverage magnifies high degree of operating leverage magnifies the effect on EBIT for a small change in the sales volume. For So a the small effect on EBIT off नहीं है, on है, on EBIT for a small change in the sales volume. For a small change in the sales volume. Point number 3 लिखिएगा. High degree of operating leverage. High degree of operating leverage. High degree of operating leverage indicates an increase in operating profit. An increase in operating profit or EBIT. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट. ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. सिर्फ इसको पॉइंट वाइज करके लिखवा देते हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आसान हो जाए आप लोगों के लिए. पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा. हाई ऑपरेटिंग लेवरेज. High operating leverage results from the existence of higher amount of fixed costs. Higher amount of fixed costs in the total cost structure of a firm. In the total cost structure of a firm. existence of a higher amount of fixed cost
higher amount of fixed cost in the total cost structure of a firm which makes the margin of safety low, मतलब क्या हुआ कि मेरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा, मुझे सेल्स उतना ऊपर करना पड़ेगा, उतना सेल्स ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी भी सेल्स रेवेन्यू से ही करनी पड़ेगी। तो जब मुझे सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, जब सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जब आप सेल्स को इंक्रीज करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा। सेल्स बढ़ाने के लिए आपको और एक्सपेंसेस को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जिस बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, उस बिजनेस में होता क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा। तो सेल्स ज्यादा करना आपके लिए एक रिस्की अफेयर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका वहां पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5। रोल नंबर 15, तुमको पसीना आ रहा है, पंखा चला लो। नहीं सर, अभी वो एक्सरसाइज करते हैं तो फिर गर्म ठंडा हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, हाई ऑपरेटिंग leverage indicates higher amount of sales required to reach break-even point. फुल स्टॉप। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा सेल्स रेवेन्यू मेरे टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरा सेल्स रेवेन्यू मेरे टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट in the total cost structure of a firm promotes higher operating leverage and its operating risk full stop। तो दोबारा से वो पूरा पॉइंट बोल दो, हायर फिक्स्ड operating cost in the total cost structure of a firm promotes higher operating leverage and its operating risk नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, a lower operating leverage gives sufficient cushion cushion की स्पेलिंग CUSHION, cushion to the firm by providing a high margin of safety
the firm by providing a high margin of safety against variation in sales. Against variations in sales. Full stop. अब जितना भी हमने पॉइंट लिखा है उसको आप लोग पढ़ लें एक बार, सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिए एक बार। सर मार्जिन ऑफ अगेंस्ट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट वेरिएशंस इन सेल्स। अगेंस्ट वेरिएशंस इन सेल्स। फुल स्टॉप। जितना भी पॉइंट लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए एक बार। सर पॉइंट नंबर 4 एक बार फिर से समझाएं। तो कैमरा क्यों ऑफ किया है? क्या है पॉइंट नंबर 4? पढ़ो। Higher operating leverage results in existence of higher amount of fixed cost in the total cost structure of a firm, which makes the margin मार्जिन ऑफ सेफ्टी। yes sir. उसके बाद क्या लिखे? So उसके आगे का मेरा नहीं लिखा, छूट गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो। ये पॉइंट तो क्लियर है मेरे ख्याल से। अरे जिस बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर में, वो एक बिजनेस के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम लेके आएगा ना। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ?
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ कि हम सेल्स देखते हैं, सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट जितना मेरा कम होगा, मुझे सेल्स उतना कम करना पड़ेगा ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकूं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत, इफ माय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज हायर, जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट ज्यादा है, तो मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट लिख रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के रिस्पेक्ट में देखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आ गया समझ में? यस सर। और कोई पॉइंट इसमें दिक्कत है तो बताइए। सर कुशन मतलब क्या होता है? अरे कुशन मतलब होता है जो सोफा के पीछे लगा रहता है, गद्दी, जिसमें तुम पीठ टेक करके बैठते हो, मतलब आराम। कुशन का मतलब एक सेंस ऑफ कंफर्ट है। कुशन इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ कंफर्ट। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो अब एक हेडिंग दे दो, फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज। Financial leverage is primarily concerned with financial leverage is primarily concerned with the financial activities concerned with the financial activities which involve raising of funds which involve raising of funds from the sources for which from the sources for which a firm has to bear मतलब सहना, for which a firm has to bear fixed charges such as interest, loan fees, etc. Loan fees, etc. These sources include include long-term debt, that is debentures, bonds, etc. and preference shares full stop। अब देखिए फर्क क्या है फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर आप माइन्यूटली नहीं पढ़ेंगे तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम लोग बात करते थे, वहां पे भी फिक्स कॉस्ट, लेकिन वो फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मतलब जब आप बिजनेस की
कोर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो उन कोर एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट, उस फिक्स्ड कॉस्ट को आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के फिक्स्ड कॉस्ट से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक डेट और दूसरा इक्विटी। तो वो जो डेट फंड है, जिससे जो डेट मतलब सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स जो है या कैपिटल जो है उसको जब आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेंगे तो वहां से जो आपको फायदा मिलेगा, जो आप उसका एडवांटेज उठा पाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट फॉर्म करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उसका जब आप बेनिफिट उठाएंगे, उसका जब आप एडवांटेज उठाएंगे तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या था, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फिक्स्ड कॉस्ट हुआ करता था, उस फिक्स्ड कॉस्ट का जब आप एडवांटेज उठाएंगे तो वो चला जाएगा किसमें, वो जाएगा ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग लिवरेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट carries carries a contractual fixed rate of interest, carries a contractual fixed rate of interest and its payment is obligatory, सर and कैरिज its के बाद payment carries a contractual carries a contractual fixed rate of interest, fixed rate of interest and its payment is obligatory, and its payment is obligatory irrespective of the fact, irrespective of the fact whether the firm earns, whether the firm earns a profit or not। क्या मतलब हुआ इसका, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, जिसमें मॉर्गेज लोन ले लीजिए, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, लोन फ्रॉम बैंक ले लीजिए, बॉन्ड इशू करके ले लीजिए, पब्लिक से डिपॉजिट ले लीजिए या डिबेंचर्स ले लीजिए, कोई भी फॉर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने का। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट रेज किया है तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो उसमें मेंशन रहता है। तो ये जो पेमेंट है ये ऑब्लिगेटरी, ये आपको देना ही देना है, हर हाल में देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। इवन इफ इट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, आपको देना है, और प्रॉफिट कमा रहा है तो देना ही। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। as debt providers as debt providers have as debt providers have a prior claim on income and assets of a firm, income and assets of a firm over equity shareholders, over equity shareholders, comma, their rate of interest is generally lower, their rate of interest is generally lower
than the expected return in than the expected return to equity shareholders than the expected return to equity shareholders. Full stop. Further, comma, interest on debt capital, interest on debt capital, सर फॉर द के बाद further, फुल शेयरहोल्डर्स के बाद फुल स्टॉप, कैमरा ऑन कर लो, शेयरहोल्डर्स के बाद फुल स्टॉप, further, interest on debt capital is a tax deductible expense, is a tax deductible expense, is a tax deductible expense. Full stop. क्या मतलब हुआ इसका? दो चीजें हैं इसमें खास। जो फंड डेट से रेज किया जाता है, जो डेट होल्डर होते हैं, उनको बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस के इनकम के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अधिकार रहता है। ठीक है, उनके पास अधिकार पहले प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को नोटिस करना है कि जो आप इंटरेस्ट डेट के ऊपर पे करते हैं, वो इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, यानी कि आप उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखा सकते हैं। अब जब आप उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे दिखाएंगे, तो उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा कि उस एक्सपेंस से, उस इंटरेस्ट के अमाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो जब मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से, लिखिएगा आगे, these two facts lead to the magnification of the rate of return, lead to the magnification of the rate of return on equity share capital, on equity share capital and hence earning per share, and hence earning per share। मतलब क्या हो गया? इन दो कारणों से, कौन कौन से दो कारण? पहला कारण कि जो जो डेट होल्डर्स है, उनका उनका पहला क्लेम रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे से, और किस चीज पे? इनकम और एसेट। इसलिए डेट से जो फंड रेज किया जाता है, उस पे जो इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना रहता है, वो थोड़ा कम रहता है, लोअर इंटरेस्ट रहता है। दूसरा कि जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है, उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे डेबिट कर देते हैं। अब वो जो एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस से हमारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाता है, और जब नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ये इसका एडवांटेज है। तो इन दो कारणों से क्या होता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है या जो रिटर्न टू इक्विटी कैपिटल है, वो बढ़ जाता है, और अर्निंग पर शेयर भी साथ साथ बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। Thus, the effect of changes, thus the effect of changes in operating profit or EBIT, thus the effect of changes in operating profit or EBIT on the earnings per share, on the earnings per share is shown by financial leverage, is shown by financial leverage,
इसको हम लोग किस चीज से शो करते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज के सहारे शो करते हैं। इज शोन बाय फाइनेंशियल लिवरेज, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू गिटमैन, नाम है ये गिटमैन, GITMAN, गिटमैन। अकॉर्डिंग टू गिटमैन, financial leverage is again comma inverted comma start to zero. The ability of a firm to use fixed financial charges fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on firms earning per share, full stop, inverted comma close, on firms earning per share, full stop, inverted comma close. In other words, comma, financial leverage involves the use of funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to the equity shareholders, full stop. Therefore, financial leverage is also known as trading on equity. Is also known as trading on equity. Paragraph change करके favorable or positive financial leverage. Takes place, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जितना भी हमने अभी तक फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में लिखा है या पढ़ा है, उसका क्रक्स है। टेक्स प्लेस when a firm earns more on the assets or investments When a firm earns more on the assets or investments purchased with the funds, comma, than the fixed cost of their use. Then the fixed cost of their use, THEIR, their use, full stop,
unfavorable or negative leverage occurs, unfavorable or negative leverage occurs when the firm does not, सर अनफेवरेबल or negative leverage occurs, or negative leverage occurs when the firm does not earn as much as the funds cost, as much as the funds cost. अभी आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोगों ने लिखा कि फाइनेंशियल लिवरेज कब होगा। फाइनेंशियल लिवरेज तो तब होगा जब बिजनेस ने जो फिक्स्ड कॉस्ट, जो 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 डेट रेज किया है, जिसके ऊपर उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, उससे उससे जो उसने एसेट परचेज किया, उससे ज्यादा जब तक उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक आप फाइनेंशियल लिवरेज नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक लोन लिया, आपने 9% पे बैंक लोन लिया या 7% पे मान लीजिए आपने बैंक लोन लिया, तो जो बैंक लोन आपने 7% पे लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बैंक को 7% सालाना ब्याज देना है, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या प्रॉफिट नहीं कमाएं। ये ऑब्लिगेटरी है, ये आपको देना ही देना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है। अब क्या हुआ, उस बैंक से लिए गए लोन से जो पैसा प्राप्त हुआ, जो मनी आपने रिसीव किया, उसको हम लोगों ने किसी एसेट के परचेज करने में इस्तेमाल किया। अब उस एसेट या इन्वेस्टमेंट करने से आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो रिटर्न है उस फंड के इन्वेस्टमेंट से, वो उसके कॉस्ट से भी कम है। तो यहाँ पे आप फिनेंशियल लिवरेज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ये घर से आपको नुकसान हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अनफेवरेबल या नेगेटिव फिनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल कब होगा? फेवरेबल एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब आपका रिटर्न फ्रॉम द एसेट्स परचेज आउट ऑफ द फंड्स रेज्ड फ्रॉम डेट सोर्सेज वो ज्यादा हो उसके कॉस्ट से। आपने 7% पे लोन लिया, आप उस पे एसेट परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर 10% कमा रहे हैं, तब जाके आपका फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा या पॉजिटिव होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग को एंड कर रहे हैं। अटेंडेंस के लिए सबको वेट करेगा।